धन्यवाद। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इवन है इस्कॉन की तरफ से हम सब सौभाग्यशाली हैं इस PGDAV कॉलेज के। और प्रिंसिपल सर और उदिता मैम और गरिमा माता जी, हम सब आप बाकी जितने भी टीचर्स एंड फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर इस्कॉन की तरफ से एक वेबिनार करने जा रहे हैं कि भगवद गीता क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। तो आज ये इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है और मैं एक बार मैं जस्ट 2 मिनट बोल करके मैं ये प्रोग्राम का जो इंट्रोडक्शन है वो नितिन प्रभु करेंगे। लेकिन फिर भी जो भगवत गीता है एक्चुअली, जैसे हम लोग भगवत गीता देखते हैं कि एक शास्त्र है, तो लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि ये जो भगवत गीता है वो एक लाइफ का मैनुअल है। और जिस प्रकार से हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, उसको कैसे यूज करना है। उसी प्रकार भगवान ने हमें जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है, तो उसके साथ साथ एक मैनुअल दिया है, शास्त्र दिए हैं। तो उसी प्रकार से ये जो भगवद गीता है वो लाइफ का मैनुअल है। और इसमें सब चीजें बता कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। हम लोग कई कई सेमिनार अटेंड करते हैं, आर्ट ऑफ लाइफ, है ना। लेकिन भगवद गीता बताता है कि हाउ टू लाइफ, कि वो आर्ट, जीवन जीने का जो आर्ट है वो है क्या एक्चुअली, ठीक है। उसको कैसे अपनी समस्याओं को सुलझाना है, किस प्रकार से हम लोग जो है भगवद गीता के माध्यम से अपने जीवन में कैसे अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करें। सो ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ये सेमिनार करने जा रहे हैं ताकि भगवद गीता की टीचिंग एक्चुअली बहुत सारे विदेशी लोग जो है इस भगवद गीता को अपने जीवन में अपना रहे हैं। जर्मनी, अमेरिका, रशिया, है ना, जापान, ठीक है, और अलग अलग इवन चीन, चाइनीज लोग, जो कि जिनका लाइफ स्टाइल एकदम डिफरेंट होता है, तो वो लोग भी जब भगवद गीता को पढ़े हैं और भगवद गीता को पढ़ के उसको अपनाया है तो उनके जीवन में ट्रांसेंडेंटल चेंज आए हैं, है ना। तो वो लोग भी जो है भगवद गीता को अपने जीवन में अपना करके बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये भगवद गीता इवन हमारे भारत में कुरुक्षेत्र में जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता को बोला है ना। लेकिन हम लोग भगवद गीता को ग्रंथ की तरह रखते हैं, कई कई लोग भगवद गीता को ऐसे रखते हैं कि लाल कपड़े में लपेट करके उसकी पूजा करते हैं अच्छे से। तो ये भगवद गीता ऑफकोर्स पूजा करने के लायक तो है, लेकिन उसकी वास्तविक पूजा ये है कि हम उसको स्वयं पढ़ें और पढ़ करके उसको अपने जीवन में धारण करें, ताकि भगवद गीता का जो व्याख्यान है, भगवद गीता का जो टीचिंग्स है, भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं, वो हमारे जीवन में, हमारे आचरण में आए और हमारा आचरण जो है शुरू हो। तो ये जो है भगवद गीता की वास्तविकता है, इसलिए हमें भगवद गीता को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन का कल्याण करने का सोचना चाहिए। तो उसी प्रकार के हम लोग, ये जो हमारी जो सोसाइटी है, हम लोग जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारी जो सोसाइटी है हरे कृष्णा, हम लोग जब प्रसिद्ध हैं, लोग हमें बोलते हैं कि हरे कृष्णा वाले लोग हैं। तो इसीलिए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम की टीचिंग्स का प्रचार करते हैं और संसार में सारी जगह का, सब जगह ये जाके बताते हैं कि नहीं, इस भगवद गीता की टीचिंग्स के आधार पर हम लोग जीवन जिए, क्योंकि जीवन जीने का जो उद्देश्य है भगवद गीता की टीचिंग्स को अपना करके अपने जीवन को सफल बनाना है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं, कभी कभी हमारा माइंड या हमें फ्रस्ट्रेट करता है, हमारा माइंड विम्सिकली हमें गाइड करता है। तो हमारे माइंड को कैसे ट्रेन करना है, कैसे अपने आप को बुराइयों से बचा करके सही मार्ग पर लेकर के आना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग भगवद गीता के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भगवद गीता के माध्यम से हम जीवन की सारी समस्याओं को किस प्रकार से सुलझा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग ने ये सेमिनार रखा है, जिसमें बहुत सारे विषय हैं, लेकिन उन विषयों में से भी जो यूथ के लिए इम्पोर्टेंट विषय है वो हमने लगभग 12 विषयों को चुना है। और 12 विषयों को चुन करके हम उस पर जो है वो विस्तार से व्याख्यान देंगे अगले एड ऑन कोर्सेज में। तो अभी जो है इंट्रोडक्टरी टॉक के लिए जो हमारे बीच में मेरे परम मित्र हैं नितिन अखाड़े प्रभु, ये वेरी वेल क्वालिफाइड है। तो नितिन प्रभु से जो है हम इसका इंट्रोडक्शन सुनेंगे कि वास्तव में भगवद गीता है क्या, और भगवद गीता के माध्यम से हम लोग किस प्रकार से अपना जीवन जो है वो बदल सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन में जो है वो बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं और सुखी बना सकते हैं, और संघर्षमय जीवन में किस प्रकार से हम लोग पीस, शांति ला सकते हैं। सो धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गरिमा माता जी से बोलूँगा कि ये नितिन प्रभु जो है वो भी अभी बोला।
थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपना वक्त निकाला और अपने बहुत बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया और ये सब हमें समझाया. एक्चुअली दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दैट इज व्हाई ये चीज और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है. थैंक यू अगेन प्रभु जी. नाउ आई रिक्वेस्ट सोनिका नागपाल मैम, शी इज द सीनियर मेंबर ऑफ कल्चर एंड एथिक्स सेल, टू इनवाइट एंड इंट्रोड्यूस नितिन प्रभु जी. थैंक यू सोनिका मैम. Thank you, Garima. So, good morning, everyone. I feel extremely honored to introduce to you all the speaker of this session, Nitin Prabhuji. So, first of all, on behalf of the entire PGDAV College evening, I extend a very warm welcome to you, sir. So, Nitinji exemplifies a perfect blend of erudition and spirituality. He is a PhD in Energy and Resource Management from Council for Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, Government of India. He did his Masters in Nuclear Engineering from Grenoble Institute of Technology, France, and University Polytechnique, Catalonia, Barcelona, Spain. He acquired executive education in energy management from Grenoble Graduate School of Business, France. Nitinji is a BTech in electrical engineering from Mumbai University. He holds 1 month international exposure on clean tech technologies in Tel Aviv, Israel. Nitinji is an executive director, Rural Electrification and Livelihoods in Customized Energy Solutions, India. And he has been associated with ISKCON for the past 10 years. So we are really privileged to have such a learned person amongst us. And now, without any further ado, I would like to hand over this virtual dais to Nitinji, and I request him to enlighten all of us on this add-on course, which is going to be organized on a very pertinent topic, that is mind management through Shri Bhagavad Gita. So over to you, sir. Hare Krishna. Hope I'm audible, right? Anji. Hare Krishna. And thank you for this opportunity. I'll blend the session with English and Hindi, and then we can see some doubts and all. So, as Umapati Prabhuji has mentioned, that it will be an introductory talk. We'll try to cover different dimensions which actually students are facing. I have gone through that journey in last 7-8 years. I joined ISKCON and Hare Krishna movement back in 2007-8 when I was in first year of engineering in Mumbai University. And then that journey has been very useful for me to understand how this knowledge can be practically implemented into our life, not just in letter, but in spirit. That is very important for the student fraternity as well as faculties also. Like now, when we are trying to build what Gita ma'am also told, we are trying to build a nation, right, with our youth. And that's very important to understand our cultural history, what this great nation has been. And we should not forget the roots. And that was rightly coined when the very beautiful Gayatri mantra was sung. So we start from that particular word itself. It was like Om, right? So what this mantra signifies, that also we have to understand. When somebody says anything about the shloka or any concepts from Bhagavad Gita, we should be rational, definitely, but we should also have faith that we should accept that. So वो particular जो मंत्र है गायत्री मंत्र, what we say, it gives 3-4 very useful points that are like foundations for our spiritual development or spiritual EQ, we can say, emotional question, intelligent question, and spiritual question. So when we talk about गायत्री mantra, it says who is absolute, right? Absolute truth कौन है, परम सत्य क्या है, okay? वो परम सत्य बनाने वाला कौन है, right? And वो हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे या हमें विवेक दे, so that we can understand सही ज्ञान क्या है. और वो सही ज्ञान भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो विलुप्त हो चुका था ज्ञान, उसे फिर से स्थापित किया और मानव कल्याण के लिए ये भगवत गीता प्रस्तुत की अर्जुन के लिए. जो भी अर्जुन भी हमारे जैसे कंफ्यूज स्टेट में थे, युद्ध करे या न करे. तो डिटेल हम देखेंगे भगवत गीता का स्टार्टिंग कैसे होता है कमिंग सेशंस में. बट दिस टाइम विल सी लाइक हाउ भगवत गीता इज यूजफुल एक्चुअली, राइट, in day-to-day life, whether we are student, whether we are faculty, whether we are a family member, whether we are a brahmachari, or whether we are running this entire college or nation as a whole. So with this small brief introduction,
and an opportunity to connect with these youth of our country, I would like to share some presentation and we'll run through that. So, you're able to see the screen? Anji Prabhuji. You're able to see the presentation also, right? Yes. In the background? Yeah. So now, as Umampati Prabhuji has mentioned, and about Bhagavad Gita, basically Bhagavad Gita means song that is sung right by Lord Shri Krishna to Arjuna. And this book, which consists of 18 chapters and 700 verses. Some analytical data, so we should correlate. We all know this. And this is a guidebook for living. It's not just our holy book. Okay, a book that is actually emphasizing हम हमारा जीवन दैनंदिन जीवन कैसे जिया जाए. So this is a guidebook for living in this world. As Prabhuji has mentioned also, it's a manual. हर एक प्रोडक्ट के साथ मैनुअल आता है. हम भी एक प्रोडक्ट है जो आए हैं, and then we have a manual of how we can live this our life by being very contributor to our nation, to the global humanity. So introduction, Bhagavad Gita is a doctrine of universal truth. Okay, परम सत्य की खोज में है. कौन है परम सत्य और उसके लिए हम कैसे मार्गदर्शन में हम उसको जान सकते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ. तो ये हमारा नॉन सेक्टेरियन है. ओके, सो हर एक रिलीजन है, राइट, उसका इंटेंशन क्या है. When it was asked, like, to the founder of ISKCON, Srila Prabhupada, everybody knows about Prabhupada, and he was the instrumental at the ripe age of 70, जहां हम रिटायरमेंट प्लान करके एक कॉटेज डिसाइड करते हैं विलेज में, he took a risk and went to America, crossing the ocean in a boat called Jalduda to spread this universal message. So this is a big history also. We should understand things don't come that easily. And when it was given, then that particular bhakti ka vriksh tha, wo USA में develop hua, and then it started spreading across. Now we have 825 temples which are propagating this message of purifying the heart, transforming the heart. And that comes actually from our Sanatan Dharma, which is eternal religion. And we commonly say as Hinduism. So in just Bhagavad Gita kya hai? It came to transform our heart through the message of Lord Krishna and his debate with Arjuna on the battlefield of great war, Kurukshetra, what happened during Mahabharata. So in our life also, we are always struggling with one of the other battle. The battle of birth, death, old age, disease. These are 4 real problems of life, not coronavirus or other problems. Janam, Mrityu, Jai, Jaradi. These are the 4 real problems of our life. If anybody wants to understand how to get out of this, yes, we have to accept the concept or the teachings from Bhagavad Gita. If you can surpass this, birth, age old, disease and death, these are 4 real problems. It are going to touch each and everyone in your life, irrespective of nationality, irrespective of gender, irrespective of your qualification, your wealth. These are going to happen. And in due course of this, you have to understand how we can surpass this and achieve true love for Godhead, which will help us to live this life very peacefully and apply our minds to whatever we do with full perfection. So that is the central or the essence of Bhagavad Gita. So this is the map what we usually show, what things in gist can be achieved through Bhagavad Gita. Very lucidly prepared by ISKCON Delhi Youth Forum. So in Bhagavad Gita, especially the topics like anger, fear, lust, confusion, feeling sinful, practicing forgiveness, very difficult, right? It's very difficult to forgive someone. We are doing tit for tat, right? अगर उन्होंने ईंट मारा तो हम पत्थर मार देंगे, वो बड़ा वाला, right? So how we should be forgetful and forgive each and every living entity to make this world a better place to live in. Then pride, seeking peace, very important. Greed. So I'll give an analogy here. In this age of Kali, we have 4 yugas. See, as a culture, we should also understand what our Vedas or what our philosophy says.
and I think this is also an objective for ethics cell. So there have been 4 ages: Satyug, Tretayug, Dwapar and Kalyug. And we are living in Kalyug, which is the age of quarrel and hypocrisy. वाद विवाद और सब लोग कपटी या ईर्ष्यालु है. सो हम उसके विपरीत कैसे जा सकते हैं? तो भगवान ने इसका मार्ग बताया है, और वो भगवद गीता में डेफिनेटली उसका गाइडलाइंस बताया है. हाउ वी कैन बी लेस quarrelsome and more merciful towards the all human beings. Okay, devotees definitely, but all other human beings. So all this small picture, if you can see, these are from the extract of Bhagavad Gita, different chapters dealing with different verses and addressing different problems. And there are only 6 main problems we have to deal with in our life. If you can deal that 6 main problems, and very important, before I go into that, sometimes when I take sessions with corporates or government entities or students or school students also, I have some good or bad habit, you can say. I do ask questions in the end or in middle also to the student community or whoever is attending the program. So please don't take it other way, but it is more like there should be not a monotonous session. So you people can always definitely raise your hand. I'm not able to see the screen since my presentation is on, but you can just type the questions in the chat box and then be able to understand. So it can be a dialogue. So I do take some small quiz and we see how we can take this topic more interestingly. So there are 6 things that are actually, if you are able to capture through the knowledge of Bhagavad Gita, we will be at peace. And these 6 things are 6 deadly sins which are written in every shastras of any religion you take. And Srila Prabhupada mentioned the word religion means, Hinduism means to make a better Hindu, Christianity means to make a better Christian, and Islam means to make a better Muslims. That should be the agenda of each and every scripture, rather than creating havoc in the society by infiltration and other things. So this is very important to understand. When we are reading the scriptures, it is for transformation of the heart. And this heart is covered by Cheto Darpanam Marjanam. The Darpan, it is covered by the dust of the 6 deadly sins: anger, lust, envy, pride, illusion, and greed. Remember this. All these sinful activities we do, anger, lust, greed, envy, pride, and illusion, can be taken out totally from your heart by simply meditating on the message of Bhagavad Gita. This is the gist. And what is all Bhagavad Gita all about? 18 chapters. It's a sandwich where you have 18 chapters, 6 chapters divided, giving 6 different teachings on Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Jnana Yoga. And the Bhakti Yoga process is really understanding who is the absolute truth. And in that process, we understand our own self. It is told in Bhagavad Gita itself and also other philosophers, there are 3 things in this world to decode. To decode is very difficult. Can anybody tell us which are those 3 things which are very difficult to decode? Hello, are you able to hear me? Hello? Yes, sir. Yes. Anybody can tell which are the 3 things in the world which are very difficult to decode or difficult to break also. It is little technical also, and you'll understand like one dimension. Then I'll start again sharing the presentation, because you will might be seeing my screen, because I wanted to see who are there on the screen. Anybody? 3 things which are difficult to crack, or they're very hard in physical sense also and subtle sense also. आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, राइट? एनीबडी? यस सर. अभिषेक चैटर्जी, आप बता पाएंगे अभिषेक जी, कौन सी तो 3 चीजें हैं तो बहुत डिफिकल्ट है तोड़ना, ब्रेक करना या जानना? Harsh Mishra is saying who we are, why we are. Okay, so I'll just come down to that. The 3 things are very simple. First is steel, right? Second is diamond, and third is
knowing yourself. Okay, these are three different things which are very difficult to decode or damage or break. So knowing yourself was the intention what I wanted to show you all. Just see the presentation again. So you're able to see the presentation right now again on the screen. Hello? Yes, sir. Yes. So these are the three different, and Bhagavad Gita actually in these 12 sessions will able to understand who we are actually, and through these teachings of Bhagavad Gita, how actually we can control our mind. Chanchalam hi mana Krishna, pramati balvad hridam. It is said in Bhagavad Gita 6 chapter 34 words. Chanchalam hi mana Krishna. Our mind is so chanchalam. It's so fluttering. All the times that Arjuna says around 1,000 thoughts, around 10,000 thoughts comes every second in our mind. Now we are attending the session, but as a student, we are thinking about, Arey, there is a deadline for tomorrow for some assignment. There is a question lined up, right? Faculties will be taking, Arey, we need to correct some question papers. We need to set something. There are some administrative work going on, right? Accreditation is going on. Might be, right? Some duties are there for the college faculties during elections time or and then during this pandemic also. So there are a lot of things going on in mind parallelly. So that's why Arjuna is addressing to Krishna to seek solace. Chanchalame mana Krishna pramati balabhadridiram. Mind is so strong that it is more stronger than the speed of the wind. It is more stronger. And how we can conquer that. So through this Bhagavad Gita, these are basic things we can learn from that, apart from mind management also, which is very pertinent topic, and that we'll be discussing in great detail. But as a college student, we all, as well as faculties, we do expect something that is also beneficial for a professional life. And all these attributes, what we have written, leadership, motivation, work commitment, developing human resources, right human resources, those will contribute for nation building. Managerial skill, way of knowledge, meditation, vision and planning. These all things can be done in an elaborate and beneficial way only we have right mindset. It is said that your attitude decides your altitude in life, right? So how to develop that attitude, which comprises of a humble nature, which comprises of temperance, sincerity, orderliness, resolution, service attitude, being merciful, being peaceful, being grave, being magnanimous. So these are qualities that as a soul we have to develop, because all these qualities is there within us, but they are covered by these 6 deadly sins: lust, anger, greed, envy, pride, illusion. The more we dwell into the knowledge of Bhagavad Gita, the more we will be kicking out this all deadly sins. And we as an individual at every moment, weekly basis, monthly basis, bi-monthly basis, have to cross-check. Is my anger going down or up? Is my lust going down or up? Is my greed going up or down? And that will define how you are going to lead your life for the benefit of society as a good human being. Actually, in sense, you have to be being human, not just writing, being human. So these are the things that we'll be touching on different aspects on covering, apart from the 12 topics like what the brochure did show. And this 12 topic converges with all these topics, because to make a holistic individual and be a leader in the society, we should have right character also. Vidya vinayana shobhate. If you have a right character and a right knowledge, then definitely you are bound to lead the society in the right direction. And that is the need of day for making this India again a glorious country, which was there in the past. And we as a future of this country, as a youth, we should all understand this our great cultural heritage and embark on the principle
of making this nation once again great by understanding our very grassroots of cultural heritage through Bhagavad Gita. So, how I'll just discuss on these different topics and how mind can definitely beneficial in managing 4M and 3H principle. What is 4M and 3H principle? Anybody? Somebody who's from management background or somebody is from basic graduation also will be able to understand. They can unmute themselves and tell. What is 4M? Anybody? They might have listened somewhere. Or 3H principle and how they converges through Bhagavad Gita. I'll try to emphasize on that. जो विद्यार्थी बताना चाहे मैं अनम्यूट करके बताएं प्लीज. Yes. So it's more like once the class we have dialogue, I think you'll be able to correlate and we'll be having that relationship of actually like as a guru and हर्ष मिश्रा बता रहे हैं. हर्ष, हमें अच्छा लगेगा कि आप खुद इसको बताएं चैट में लिखने की जगह. प्लीज आप इसको बोलकर बताएं. Yes, हर्ष जी आप बता सकते हैं. Yes. So in management, actually, what we about 4M, if we will talk about 4M, so definitely we talk about money, material, and machine and manpower. These Yeah. are the four basic things which builds the business or business framework, and it decides the altitude of any business. We Okay. manage this thing. Yeah. Yes, excellent. This is perfectly fine, right? And 3H. What will be 3H? It is related to human body. I've given some hint. One has to be heart. Yes, excellent. Ma'am, yes. Obviously. Health, honesty, heart. Health, honesty, heart. Okay, heart is definitely there. Okay, that is head, heart, and hand. Okay, and 4M is basically it is man, machine, money, material. So these things we have to manage in life by hook or by crook. The material nature or the prakriti के 3 गुण होते हैं, तत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, will make us work for managing the people, for managing the machines or technologies, for managing the money, and for managing the material, right? And if we follow the real knowledge through hand, heart, and head, we're able to manage all these 4M very efficiently by 3H principle. And that is what a true leadership is all about. Through mind, we can control this 4M, and with 3H, we'll be able to suffice this and get a better result in whatever work we do. So that is actual leadership by managing this 4M and with 3H for helping to grow our organization as well as we as an individual. So what Krishna says about this in Bhagavad Gita? So it says, I am the strength of those who are devoid of personal desire and attachment. Arjuna, I am the legitimate desire in those who are not opposed to righteousness. तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं desire, right? It's very important. What we desire defines our destiny. So there is something called what I was studying for a long time through my self-realizations, desire to destiny journey. एक छोटी सी इच्छा से हमारी डेस्टिनी जो आखिरी लक्ष्य है कैसे डिसाइड होता है. And in that we have to actually apply mind and we have to actually apply the wisdom from our great scriptures. So what is desire to destiny? Just see the flow chart now, how it works. You have a desire of eating something, for example. That small desire, you think upon it, think upon it, think upon it, think upon it, think upon it. It becomes thought, right? Then thought, again thought upon it multiple times. You feel now that thought has come on. Now we have to put that into action. So desire to thought, thought to action. Now action when you do for multiple times, करते रहना है, वो आपका habit बन जाता है. And when habit is continued for longer time, 4 years, 5 years, 10 years, it defines your character.
and character defines your destiny. For example, we take sessions, right, on taking people out of intoxication through teachings of Bhagavad Gita, right? People who are addicted to drugs, smoking, and all. These are very pertinent problems. Not only in Western country, it has also grabbed India now because of media propaganda and wrong dealings. So suppose a person think of constantly of having smoking, right? It's a bad thing. But he constantly meditate on that, meditate on that, meditate on that. Then that thought becomes so powerful, then he thinks, let's try that. And he gets some association or he gets some company to put that into action. And when he does that action continuously, it becomes habit, which is difficult to break. And then we go further, that defines his character, that he's intoxicated. He cannot be brought back. Failure of kidney, livers. And finally, what is his destination? We all know. We need to operate that person, him or her, and to get out of it. So that is a lot of financial, emotional, every burden on that person and his family. Now, Prabhuji, you have to tell me, now you can ask, Prabhuji, where we can apply Bhagavad Gita principle in this? So we have to apply Bhagavad Gita principle either on desire, either on our thought, either on our actions. Because when it becomes habit and character, it becomes very difficult to get back or pull back from that habit. So how to purify our desires? How to purify our thoughts? How to purify our actions? These are the three main things we are going to deal. And these all desire, thoughts and actions are peripheries of mind. Leadership, motivation, managing and all, these are outcomes that are very much seen by the outside people. But we have to create internal strength so that these outcomes are very much in shape to give desired result. So now you understand. Any questions on this desire to destiny and where we can apply Bhagavad Gita principle? So you're able to follow the session or it is little bounce? I think Harsh, you can now ask your question. But you are able to get the points what I'm mentioning, right, ma'am or any student? Because I think in online it becomes very difficult because when it is offline session, we can understand from the faces of students. I have taken almost many guest lectures and sessions in IITs and IIMs. So it becomes, or in regional colleges and other universities also. But it becomes very easy to understand whether a person is understanding or not by seeing the face only. And here a lot of videos are off also. So I cannot judge that. But I think people are able to follow that, right? What I'm trying to tell. The students, as P.G.D.A.V are saying, please switch on your videos if you can. That is always an interactive session that looks better if your videos are on. And if you have any query, Nitinji, can they ask the queries in between, or it will be better they ask after that? Yeah, they can understand between also. If you have any query, so you should ask. Yes. That will be. I think कहीं पर भी आपकी कोई query आए तो आप उसको पूछिए. Yeah, two-way communication always make the session interesting. Yeah. तो yes, हर्ष जी आपको कुछ कहना था? I think. Yes, sir. I have one question regarding this destiny and desire thing. So, thing is that हम destiny की बात करते हैं. We talk about desire. So, भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि whatever karma you do, don't hope for any result or something. So, I want to know that अगर हम किसी result के बारे में नहीं सोचेंगे and we have some kind of desire. So, how we are going to work on that without thinking about what we say outcome or anything? So if I understood your question correctly, you mentioned like भगवत गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वो पॉपुलर सेइंग भी है ना, कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो, right? Yes. Right, and then you are telling how like na, if you don't expect outcomes, how we can desire to perform something. Yeah. Yeah. So we have to be understand and very intelligent here that Krishna tells to Arjuna that
You have to fight. Arjuna was telling, I don't want to fight in Bhagavad Gita, right? Because he was perplexed, confused. Why? Because he was telling, I don't want to enjoy this kingdom by killing my own kinsmen, right? So, in the same way, we have to work according to principles given by the Shastras or to maintain our daily lives, because we have taken birth and then we have to follow those principles to achieve something. But at the same time, when we actually get depressed, right, when we actually get confused, when we try to see, we expect too much from the things, right? We put our right efforts. We all put for cracking some exam or something. But when you start thinking more on the results and less on the efforts, thing becomes dicey there. So always we have to remember, Harsh, we have to put maximum efforts. Do your best and keep rest to the Almighty. Okay, whatever efforts you put, just have firm faith in that, in your process, then definitely the results will be actually in your favor. Okay, Harshji? Yes, but nowadays what we see that whatever we desire, whatever we want to achieve, first we see the outcome, then only we start following that path. So how we can choose that, like how we can get rid of this thing? Yeah, so that is very important. So for there, see, for Arjuna, who was there to guide him? Krishna. Krishna was there. So Guru, Sadhu और शास्त्र, ये बहुत important concept है, where when we are perplexed, confused, we need to take shelter of our mentor, who actually knows where our boat or car or our life ka journey will go haphazard. So this is very important point that will be touched upon in coming sessions. From where we should inquire, are we going in the right direction or not? And that is the major reason we don't find people who can listen to us. We don't find people who can share something with us. This is a major reason, because we are occupied with WhatsApp University. That has become our best friend now. And that has created more loneliness. So in Bhagavad Gita, actually it mentions when Arjuna is perplexed, and then in Bhagavad Gita, 2nd chapter, 7th verse, you can see Arjuna actually surrenders to Krishna. Now you guide me, and then I will follow. Similarly, somewhere in the life, we have to accept the teaching that we should have one guru or a mentor. We have mentors in our schools and colleges. They are actually helping us to guide on the right path by creating a better character for nation building. Similarly, when we aspire to do something in spiritual life or material life, we should have somebody as a mentor to see, like, now whether we are diverting from our right path or not. So that is the concept of mentorship. Okay, Harshbhai? Yes. Yes. So we'll dive into detail going ahead. These are interesting things you are putting forward, and these are rightly taught in Bhagavad Gita. So I'll again go on presentation. Hardly 4-5 slides are left, and then we can have detailed discussion. प्रभु जी मैं बोलना चाहूंगी, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो भी हम कर्म करें उसमें हमें ये अंतर समझना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही सही है वो right है. अभी धर्म क्या है? That is another one big question or big topic we can discuss, right? So that is actually told in Bhagavad Gita, right? What is actual religion? Religion is not like the tag we have given: Hindu, Muslim, Christian, Judaism, Buddhism, Jainism, right? Religion is actually, right, where we actually transform our hearts and get these 6 deadly sins out and see what is beneficial for the entire society, not just our selfish motives. When we become more selfish, then things go wrong, right? So we'll discuss in this topic, and thank you, ma'am, for highlighting this very important verse where, like, we have to discriminate what is right and wrong, and Krishna did that for Arjuna. Okay, so I'll just go into the topic, and then we'll come back for the more detailed discussion. So I'll just finish the presentation. Sir, we have another question with us. Okay. Yes. Adarsh Dubey is asking, how can we control our emotions? Yes. How we can control our
emotions. So discussing that how we can control our emotions. So emotions basically are result, okay, which we find because of some missing link in our life. Okay, whatever my limited experience, Umapati Prabhu or some senior faculties or faculties can add into it. Because in this journey of life, we come across different people, relationships, through which these emotions are tied. See, emotions are tied through living thing also and non living thing also, है ना. मोबाइल से भी बहुत वो इमोशनल हो जाते हैं, गुम हो गया तो दुविधा में पड़ जाते हैं. But more emotions do come from our connection with the living things, means society basically, our parents, our siblings, our teachers, relationships, family members, and all. So once we understand how these emotions are very important for achieving right results and how to control them, so Krishna says definitely we become so morose. For example, when someone, our dear one, left us, right? किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है जो हमसे बहुत प्रिय था, हमसे लगाव था, प्रेम था, right? So we become so much emotional and then we go into the state of depression sometime because that person was so lovable and all. But Krishna in Bhagavad Gita 2nd chapter says like, because first thing we have to understand in this world and in this teaching of Bhagavad Gita is, and that is we are not able to understand that we are not this body, we are soul. हम आत्मा है, शरीर नहीं है. Krishna says specifically these things because we are tying to our relationships or emotions through external periphery. Because our आत्मा कैसी है? सत्य चित आनंद है. It is eternal, blissful and knowledgeable. Once we understand this deep rooted knowledge, which is difficult to decode because layer है हमारे ऊपर 6 deadly sins का, and that is making us move so emotional. So Krishna says, you are a part and parcel of me, and this Atma is never be destroyed by fire, by water, by anything. So we have to understand this deep philosophy that we all are eternal. And when emotions are related only to bodily concepts, then we are in trouble. So we have to go one more layer above and see how these emotions can be controlled at soul level and understand the actual eternal principle of soul, which is indestructible. So whatever person has left us, he has just left the body, not the soul. Okay, so he has transformed from one body to another. So we have to pray or bless that soul so that he can always continue on the higher path of achieving true love for Godhead and make his life or her life perfect. Okay? We'll discuss this in more detail in chapters coming forward. It's an introductory topic. Hello? Can we move forward? Okay. नितिन जी, मैं माफी चाहूंगी बीच में रोकने के लिए, पर मुझे लगता है कि इस समय कोई बात नहीं, कुछ स्लाइड्स रह जाए, बट शायद विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब मुझे ऐसा लगता है, मतलब बाकी आपके वो ज्यादा आवश्यक है, जिससे कि वो समझ पाए कि वाकई इसमें क्या मतलब, इस किस तरह से उनके प्रश्नों के जवाब उनको मिल पाएंगे. मुझे ऐसा लगता है. बाकी जैसा I totally agree. Like now, I think we have time, so I will also request Umapati Prabhu because he is in truly deeply into philosophy and understanding through practical experiences. So Prabhuji can also share his thought points and whatever with my limited experience I know through my journey, I'm trying to correlate and explain. मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ बीच में वो करने के लिए, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आ रहे हैं तो शायद अगर उनको उसके उत्तर मिलेंगे तो उनकी जिज्ञासा उस कोर्स के लिए और बढ़ेगी, और वही हम चाहते भी हैं. तो मैं उमापति जी से या नितिन जी से आपसे आग्रह करूंगी कि प्रश्नों के उत्तर अगर आप देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. यस, ओके, अवश्य. तो आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहते हैं प्रश्न. कृपया आस्क योर क्वेश्चंस. सर,
Yes. हाँ जी, you are audible. Please speak. सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर दूसरी तरफ जब श्री कृष्ण भगवान जब जो अर्जुन के समय जो संकट आ रहा था कि जब वो युद्ध उन एक समय था उस पक्ष में कि उनका परिवार है, मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, जब दूसरी तरफ जो है गुरु द्रोणाचार्य है और भीष्म पितामह है, तो वो सोच रहे थे कि संकट में आ गए थे कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं। तो उस समय पे जो श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को एक श्लोक कहा था, क्या मैं सर वो आई वांट टू स्पीक नाउ। Yes, you यदा can. यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन सर्जाम्यहं परित्राणं साधुनाय विनाशाय च दुष्कृपराय धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगो युगो। सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो श्लोक है, क्या श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ये सच में कहा था? हाँ, सच में कहा था। और इस श्लोक का क्या तात्पर्य है सर? इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि भगवान बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं प्रकट होकर अवतार लूंगा। विनाश के दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, और इसके लिए मुझे युग युग में आना पड़ेगा, तो मैं जरूर आऊंगा। यहाँ पर एक्चुअली वो जो धर्म की स्थापना बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं एक्चुअली धर्म क्या है, धर्म क्या है। धर्म बता रहे हैं कि जो धर्म है वो है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की सेवा करना ही धर्म है ना। धर्म का मतलब वी आर इटर्नल, वी आर सोल, और जो आत्मा का कर्तव्य है वो परमात्मा की सेवा करना है, परमात्मा से कनेक्ट होना है, भगवान से कनेक्ट होना है। इसीलिए भगवान से कनेक्ट होना ही एक्चुअली वास्तव में हम सभी का धर्म है। तो जब जब धर्म का ग्लानि होगी, जब जब व्यक्ति ये भूल जाएगा, जब जब व्यक्ति को ये स्मरण नहीं रहेगा, जब जब व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, नहीं कि अब वो मटेरियल थिंग्स के प्रति, अपना भौतिक संपत्ति के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाएगा, भौतिक विषयों के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाएगा, तब तक धर्म की स्थापना अनिवार्य हो जाएगी। तब तक भगवान किसी न किसी माध्यम से या स्वयं प्रकट होंगे या फिर अपने किसी पार्षद को भेज करके इस प्रकार से धर्म की स्थापना करेंगे। भले ही दुष्टों का विनाश अनिवार्य है, भगवान के ये मुख्य कारण है। भगवान बोले हैं कि नहीं, मैं दुष्टों का विनाश करूंगा, साथ साथ में साधुओं का उद्धार भी करूंगा, और उसके साथ साथ जो मेन कार्य है वो एक्चुअली धर्म की स्थापना करना है। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला है कि धर्म की स्थापना अनिवार्य है। जहां पर धर्म होगा वहां पर क्या होगा, वहां पे विजय होगा। धर्मे बोले धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो हंति हता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म का पतन करता है, धर्म को मारता है, मारा हुआ धर्म उसको मार डालता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि धर्म की रक्षा हो। धर्म क्या है, वही कि धर्म है, ऐसा नहीं धर्म कोई रिलीजन नहीं, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, ये जो सब विश्वास है। ठीक है, धर्म का मतलब ये है कि मानवता का मानव के प्रति क्या कर्तव्य है, मानव का ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है, एक्चुअली धर्म ये है। तो उसकी स्थापना अनिवार्य है। अगर उसकी स्थापना होगी तो ये जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये जो संसार में जो न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं हमारे, इन सब का जो है ये सब हमें दिखेंगे नहीं। तो यही इम्पोर्टेंट है, भगवान यही कहना चाह रहे हैं, धर्म संस्थापना संभवामि युगे। इस युग को भी आवश्यकता है उस धर्म की, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। ये जो वर्तमान है एक्चुअली हमारा, है ना, इस वर्तमान को वास्तव में उस वर्तमान नेता, वर्तमान अध्यक्ष की, उस वर्तमान की आवश्यकता है जो कि वास्तव में हमारा वर्तमान का कर्तव्य बता सके, वर्तमान का धर्म निर्धारित कर सके कि इस वर्तमान समय में हमें क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उचित क्या उचित करना चाहिए, क्या उचित करना चाहिए। भगवद भगवान बोले, इसी 4 चैप्टर में बोले हैं कि कर्मणा अपि बोद्धव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणा अपि बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हमें अपने कर्मों का ज्ञान होना चाहिए कि वह शुभ कर्म क्या है, इसका पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पायस कर्म एंड व्हाट इज द जो बुरे विकर्म क्या है, उसका भी पता होना चाहिए। जब हम ये पता रहेगा कि नहीं नहीं हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, तब हम जान पाएंगे व्हाट इज द अकर्म, हमें करना क्या है। ठीक है, इसीलिए कर्म के विषय में जाएगा। इसलिए जब आंसर दे रहे हैं हम लोग कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, तभी तो उसके रिजल्ट के प्रति या उसके प्रति अनासक्ति भी होंगे। यस,
I think you understand. आपको समझ में आया? Yes, definitely, sir. Yes. आग्रह है, विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप अगर कोर्स को लेकर, जो अभी नितिन जी ने आपको इतना सब बताया है कि जो कोर्स में होने वाला है और जो हमने रूपरेखा भी रखी है, उससे रिलेटेड अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो वो जरूर पूछिए। बाकी तो जब आप सेशन होंगे उसमें यही आपको सब बताया भी जाएगा, तो प्लीज आस्क द रिलेवेंट क्वेश्चन। मीता जी हमारी पटनागर इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। मीता जी प्लीज पूछिए। Yeah, Umapati ji, I have one doubt. Actually, I have been teaching English literature, तो गीता भी मैंने थोड़ी पढ़ी है, काफी सारे एपिसोड्स में देखती भी रहती हूँ। तो I had this doubt, जैसे आपने you talked about six deadly sins, जिसमें आपने बोला sloth, lust, envy, greed, gluttony, pride and wrath. तो ये जो 6 deadly sins हैं, ये क्रिश्चियनिटी में भी बताए गए हैं। मीन्स इफ यू रीड अबाउट क्रिश्चियन कैथोलिक जो उनका है, तो ये सेम सिंस उसमें भी हैं। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट गीता, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी वही बातें हैं जो कि गीता में है। सो व्हाट इज द डिफरेंस नाउ, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट कि इसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बातें हैं जो हम लर्न कर सकें। सेम चीज़ें, क्योंकि हम कुछ मोरालिटी प्लेज पढ़ाते आए हैं, तो उसमें भी कुछ मैसेज कन्वे किया है थ्रू दी 7 डेडली सिंस, कि जैसे लस्ट है वो हमारे लिए क्रिश्चियनिटी में भी गलत मानी गई है, ग्रीड, ग्लटनी, तो सेम चीजें गीता में भी हैं। बट व्हाट इज लाइक, इसके अलावा और कोई ऐसी स्पेशल चीजें हैं जो कि गीता में बताई गई हैं? कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस? हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पर भी हमें ये सेम चीजें मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे भगवद गीता में क्या स्पेशलिटी है। तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्या है कि जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी का जो आगमन हुआ है, हम लोग देखते हैं कि भगवद गीता जो है आज से, एक्चुअली भगवद गीता भगवान ने बोला है, भगवान ने भगवद गीता बोला है कब, लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व बोला है, 1 करोड़ समथिंग उसका डायमेंशन है, उसके उस वर्ष पूर्व बोला है। और कब बोला है, सूर्य के देवता विवस्वान को दिया है भगवद गीता। तो तब से जो है जो ये भगवद गीता ज्ञान तब जो है उन्होंने यहाँ पे विस्तारित किया। उसके बाद फिर आज से 5,500 वर्ष पूर्व जो अर्जुन को दिया। तो ये भगवद गीता का जो ज्ञान है वो अति प्राचीन है, और प्राचीन होने की वजह से एक्चुअली जो है वो ये जो डायमेंशन है, जैसे क्रिश्चियनिटी कब आया है, क्रिश्चियनिटी आया लगभग 3,000-4,000 साल, या फिर हम लोग देखते हैं कि 2,000 वर्ष पूर्व, है ना, उसका ये है। तो वो आया है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि, या हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी वर्णन है, उसमें भी वर्णन है। इट इज जस्ट लाइक ए पॉकेट, उसमें पॉकेट डिक्शनरी की तरह वर्णन है कि हमें वो गलत तो है। जैसे भगवान, जैसे ईसा मसीह बोल रहे हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, तो बोल रहे कि नहीं, उन्होंने अपने अपने बारे में बता दिया ईश्वर का पुत्र है, पर अपने पिता के विषय में नहीं बता रहे, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवत गीता में बताया गया है कि जैसे लस्ट गलत है, ठीक है, लस्ट गलत है, या एनवी नहीं करना है, या ये सब अहंकार नहीं करना है, जो कुछ भी है जो बताया है, लेकिन वो गलत बताया है। अब यहाँ पे बता रहा है कि नहीं, हाउ टू ओवरकम। भगवत गीता में प्रमाण भी दिया है, ठीक है, प्रमाण दिया है, तात्पर्य दिया है। ध्यायतो विषयान् पुरुषान् संघास्तेषु उपजायते, संघा संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् संजायते काम, है ना, क्रोधात् संजायते काम। इस प्रकार से तो वो पूरा ये बताया कि हाउ लस्ट आता कहाँ से है ना, लस्ट कहाँ से, ओरिजिन उसका लस्ट का हो कहाँ से रहा है, कैसे लस्ट का ओरिजिन हो रहा है। इसलिए उसको डिफीट करने के लिए हमें करना क्या होगा, ठीक है ना। लस्ट बुरा है, इट इज ओके, लस्ट बुरा है, या एंगर बुरा है, अहंकार बुरा है ना, या और जो भी 6 एनिमीज वो बुरे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। सबसे पहले तो ओरिजिन जानना पड़ता है, जन्म कहाँ से हो रहा है जन्म कहाँ से होगा, तभी जैसे शत्रु है, शत्रु कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो हम देखेंगे कि नहीं, शत्रु उत्पन्न यहाँ से हो रहा है, इसलिए इसको डिफीट ऐसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन जो है वो भगवदगीता बताएगा, और इसीलिए ओरिजिन को लेकर के जब आगे जाएंगे कि नहीं, हमारा ओरिजिन यहाँ से है, अब इसको डिफीट करने का तरीका भी भगवान बताए यहाँ। भगवान बताए नहीं नहीं, अब भगवद गीता जो है इसको डिफीट करने के लिए क्या करना है, बोले कि नहीं, काम ईर्ष्या क्रोध ईर्ष्या रजोगुण समत्व,
जो काम है वो क्रोध है, कहाँ से, ये रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसको क्या करना है, तीव्र भक्ति योग, भक्ति योग करना है, कैसे किस प्रकार से भक्ति योग का आश्रय लेकर के या किस प्रकार से इसको डिफीट करना है, वो भी बताया। तो ये इसलिए स्पेशलिटी भगवद गीता स्पेशल इसलिए है, इसीलिए लाइफ मैनुअल क्यों कहा गया भगवद गीता को, क्योंकि जितना जैसे जो हमें डिमोटिवेट करने वाले शत्रु हैं, या जो हमारे लाइफ को डायरेक्शन, जो हमारे लाइफ के डायरेक्शन को मोड़ते हैं भौतिकता की ओर, ठीक है, उसको कैसे वापस लेके आया जाए, वो भगवद गीता अच्छे से बता रहे हैं। थैंक यू, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस, थैंक यू। अभी हमारे पास मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न नहीं है। मैं नितिन जी को मैंने बीच में रोक दिया था, मैं माफी चाहती हूँ नितिन जी। अब आप आगे अपना प्लीज कंटिन्यू बताइए जो और आप बता रहे थे, प्लीज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन चैट बॉक्स, था कि जो डीडी पे सीरियल आता है रामानंद सागर, राइट, तो कृष्ण भगवान हंसते क्यों रहते हैं हमेशा, राइट। तो जो भी मुझे समझ में आता है, उमापति प्रभु जी ऐड कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान को पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर भी पता है, राइट। अगर हमें फ्यूचर या प्रेजेंट पता है ना, हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। सो वी आर ऑलवेज इन रिलैक्स और ना स्माइली मूड, जो मैंने प्रैक्टिकली कोरिलेट कर पाया है। व्हेन वी आर इन टेंस, व्हेन वी डोंट नो फ्यूचर और डोंट नो रिजल्ट क्या होने वाला है, तो कृष्ण भगवान एक्चुअली नोज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी ओनली नो पास्ट, राइट। प्रेजेंट का तो पता ज्यादा नहीं होता है, जो करते हैं उससे फल मिलता है, एंड फ्यूचर वी आर ऑलवेज इन परप्लेक्सिटी स्टेट। तो इसलिए हम स्माइल कर नहीं पाते, टू कोरिलेट वेरी इन ह्यूमरस वे, ओके। तो भगवान को तीनों चीज पता होता है कि हम आगे क्या होने वाला है, सो ही इज ऑलवेज इन स्माइलिंग मूड, राइट। नार्जुना इज ऑलवेज इन टेंशन मूड, बिकॉज उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, सो दैट्स व्हाई इज कंफ्यूज्ड। तो ये प्रैक्टिकली बता पाए, उमेश भी और ऐड कर सकते हैं। यस, भगवान जो है, भगवान का एक गुण है कि भगवान जो है वो स्मित हास्य, भगवान के जो मुख पे जो हंसी है वो स्मित हास्य है। स्मित हास्य का मतलब वो भगवान अट्रैक्टिव है अपनी हंसी के माध्यम से भी। भगवान का मुस्कुराहट जो है, यानी कि जो हास्य है वो भी अट्रैक्टिव है। क्यों हंसते हैं भगवान, इसके लिए इसका प्रमाण देते हैं भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं, जैसे नितिन प्रभु बता रहे हैं कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं, ठीक है। भगवान बोलते हैं कि मैं सभी को उत्पन्न करने वाला कर्ता मैं ही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं सब जानता हूँ, ठीक है। इसीलिए जो लोग भगवान को भजते, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, एंड हम लोगों ने देखा होगा जो कृष्णा डिवोटीज आर ऑलवेज स्माइलिंग, जो भगवान के भक्त हैं वो भी स्माइल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का शरण में है, भगवान का भक्ति करते रहते हैं, दैट्स व्हाई। इसीलिए भगवान जो है वो स्माइल करते हैं, स्मित हास्य करते हैं, ठीक है। यस, Yes, I'll just go on to that. And these are very good questions. So when questions are coming, we understand like, there is an interest. तो दो ही चीजें हो सकती है लेक्चर में, जो फैकल्टी को भी पता है, एक तो पूरा समझ में आया, एक तो पूरा समझ में नहीं आया। नहीं, दो ही चीजें। When we take sessions also it happens with every teacher. So I'll just go again with the presentation and do keep us posted on the questions. So So we discussed about like how we can control our mind and then achieve these attributes of leadership. Leader, we usually know it should be visionary, realizing the vision and seeking the way forward. Why this is a need? This is a need because see, leader is not in that national state like where we have our prime minister or something. We each are leader in one of the other sense. एक या दूसरे चीज में हम leadership दिखाते हैं, whether in our college, teaching, whether in organizing events. So these are small things we can actually influence our day-to-day realization. Motivation, very important topic that can be addressed through Gita is desire to act. We discussed on this desire basically. And then for satisfaction, and for satisfaction of whom, that we have to understand. We cannot satisfy each and every living entity. And in that process, we are going to get hurt or unexpected miseries or suffering aane hi wala hai. So we have to understand actually whom we have to satisfy. Who is the actual benefactor of all our yajna? So we have to understand this. This is a very higher intelligent question. Are we satisfying our own near and dear ones? Or there is something higher person whom we want to satisfy and that will make our desires purified. So there was again one question.
गलत सही तो सब ईश्वर जानते हैं, but Krishna has given one thing that he tells us to act is our free will, the desire to think. So it doesn't interfere in that. So desire we have to purify, and what is the process of purifying desire? We'll just see how desire comes. We have discussed entire process. So our desires are pure in beginning because they are part and parcel of Lord Krishna. But when we come into association of bad things, bad association, our desire get spoiled. So this is very important. Sadhu Sang, or like good association of good people who have good qualities, what we have discussed. And for that, Krishna doesn't intervene into that. So we have to seek people who have actually achieved this knowledge, and then we have to understand from them and purify our desire. So we understand what is actually right or wrong. So from there comes the motivation, a stable and intense desire to act, and a self-driven passion, which are not influenced by externalities like external emotions, external calamities. So in Bhagavad Gita is mentioned, we are influenced by three things. The things that are happening because of natural calamities, famines, earthquake, heat. Now in Delhi we'll get intense summer now. Intense winter has gone. Then that is because of natural calamities or naturally occurring things. Adi Devik, Adi Bhautik, Adi Adhyatmik. Then second thing is by our society. They will have some not trouble, but they will somewhere like keep us up and down in the situation. And then third is by our own mind, body, and intelligence will cause us some sufferings. Suffering through society, some sufferings to Adi Devik means by the action of nature, through demigods, and by finally our own mind, body, and intelligence. So these are things which motivates us. Once we understand how these sufferings are caused, this cause and causal effect, what we say, cause and effect, what Umapati Prabhuji was also explaining. The right origin we have to hint, and why it is not going to happen, we have to find out the reason for that. And that is a manual what we are going to study. So similarly, we are going to discuss more on how motivations are shaped. Our motivation to do something are shaped through the teachings. So similarly, one thing is always we blame others, right, for our own failures. So why that happens, and how these stones that are thrown towards us in form of criticism, can we make a road, or can we make a wall out of it, or a bridge? So this is very interesting analogy. When somebody throws criticism at us, and how we should take it, create big wall which will not able to see the other people, or a bridge where it can connect two people. So we have to understand, and these criticisms are very useful to build our motivation in long run. Then work commitment. I'll just skim through this, and then we'll take more. Work commitment is also important because it helps us in giving understanding of how our karma defines our work commitment, and that will help us to overcome these sufferings what we are going through. Putting others before oneself, very important. This is something called as service attitude, which Arjuna tried to develop, or everybody. If you see entire Mahabharata or serials you have seen, the aunt of Krishna, Queen Kunti, right? They were always putting oneself before putting others before oneself. So that is where we see as a service attitude, service for the nation, where we sacrifice our own comforts through austerity, tapa, for the welfare of others. That is very important. Teamwork are the things that are highlighted through this Bhagavad Gita principle. How collectively you should be intelligent. You know what happened when there was a selection of army. Duryodhana selected Narayani Sena, the army of Krishna. And the intelligent person, a Vivek Buddhi wala person, ne Krishna ko choose kiya because he's the source of everything. And the results was destined that where there is a Krishna, it is all victorious. So that is very important to understand. And finally, a brilliant guide to operating manager, basically. So how to
help us in managing our own life. Manager is not in only industry. We are manager of our own body, of our own life. How this guide as a Bhagavad Gita will help us to mind our daily activities. Right from the day we get up in the morning till the day we sleep, we do n number of activities. So in this n number of activities, as Umapati told and Mita Mataji also asking about how we should overcome these deadly sins, are coming in each other ways. Somewhere we are envious of somebody, whether we are jealous of somebody, whether we are angry with somebody, whether we have lusty desires. Lusty desire is not just like attraction for opposite sex, man for woman or woman for man. It is more for having anything that is more quantity than it is needed. That is one form of greed also. Lust in excessive form is called greed. So that is also how we can become a manager in making our life really smooth. Similarly, it is told in 3rd chapter of Bhagavad Gita. What are the path of Karma Yoga? Seva. What is that unselfish work we can do to make ourselves purified? And there is something Lord Krishna is also told in Bhagavad Gita that I am Rishikesh. Okay, Rishikesh we only know is a hill station, or it is a place where Ganga comes to the plains. Right? Many people have visited that. It's a yoga nagari or a spiritual capital of the world. But Rishikesh is the name of Lord Krishna. Means the controller of senses, master, स्वामी है वो इंद्रियों के. अभी इंद्रिया क्या है, ये 6 इंद्रिया क्या है, उसका भी ज्ञान दिया है. और 6 इंद्रिया की वजह से ही हम बहुत सारे कर्म करते हैं. 6 इंद्रिया क्या है, 5 इंद्रिया होती है और एक माइंड होता है. 5 इंद्रिया कौन सी है, हमारी कर्ण है, हमारी आंखें है, हमारा जीवा है, हमारी त्वचा है और हमारे जेनिशियल्स है. इससे हम इस संसार का भोग करना चाहते हैं. और इसी अगर हम ठीक से सही चीज या गलत चीज का भोग कर सकते हैं तो हमें सफरिंग होती है. एंड छठा सेंस है हमारा माइंड. सो हाउ वी कैन कंट्रोल दिस माइंड थ्रू अनसेल्फिश वर्क और सेवा एटीट्यूड एंड बी इन अलाइनमेंट विद द प्रिंसिपल that is taught in Bhagavad Gita. So what is our duty? That is explained in Bhagavad Gita. And that was also the shlok, right, what Umapati told. Like, what is our duty for the betterment of this society towards the service of God? Okay. And without a desire for greed, for enjoying the fruits of labor. Once we start thinking, agar ye karne se mujhe ye milta hai, then actually that भावना of expectation comes, and when there is expectation, निराशा होने ही वाली है. ये तय है. Expectation रखना है, but we have to understand कि results are not in our hand. हमारे हाथ में efforts है. So there is some question, I guess, right? Just see. Krishna has raised. If you have any question, please write. Okay, I'll definitely attend all. Okay, there is no question. नितिन जी, हम 5 मिनट अगर में आप अपना बात रख लें. Yes, I think we are almost on the verge of धन्यवाद. So we did discuss what will be taught in these sessions, right? What are the 6 senses, how we can control them. And finally, we have to understand Devi work culture and Asuri work culture. What are the pious culture? What are the qualities of a person who is in mode of goodness, who is in mode of ignorance? So this is highlighted in Bhagavad Gita. What is fearlessness? What is purity, swachhata? What is self-control? Straightforwardness, self-denial, fault-finding, absence of fault-finding, modesty, absence of envy and pride. And that what are Asuri? Asuri means demonic qualities, egoism, dvesh, desire-centric for own self-enjoyment, improper performance. So these topics will be developed. And then finally, we are talking about how our man management skills also very important through mind mapping. So there is a concept called, I just see how the way of knowledge, managerial skills, we did discuss 3M and 4M and 3H principle, but we have to understand very important way of knowledge. So there is very interesting saying, you are sincere, but that doesn't equal to your ability. There is something in between that makes you able to understand this real knowledge.
Your sincerity is required. But in that process, you also require greater wisdom from the teachings of Bhagavad Gita to become able to take right decisions in your life through a right mentor. That is where how the way of knowledge is transferred from Lord Krishna to the Guru Shishya Parampara, disciplic succession through our Char Sampradayas, in which ISKCON comes under Brahma Gaudiya Sampradaya. So unless and until it's an authenticate lineage, authenticate norms के अंदर आता है, right? Then this knowledge is real. So this is very important to acquire knowledge from right source. And Prabhupada has given this source of helping us to maneuver through this difficult journey of life through the teachings of Bhagavad Gita. So Lord Krishna says, and I'll conclude with this, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. So by practicing what? That is very important question that we are going to dwell in these 12 sessions. And through this practice, we'll develop detachment. Okay, the more we are attached to something, the more we are affected by our emotions. So we have to develop a practice that will help us in getting detached. So this is how we are going to take these sessions. Yeah. Hare Krishna. Thank you for this opportunity, and I'll hand over to the organizers. Garima. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट. आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया. जितना भी आज हमने समझा है और जाना है, उस सबको अगर मैं 2 मिनट में वाइंड अप करूं तो वो मैं एक बारी बता देती हूँ. सबसे पहले तो प्रभु जी ने बताया राइट नॉलेज के बारे में. हम लोग लाइफ में सभी कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है, उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, उसके लिए हमें विजडम होना चाहिए. और विजडम हमारे पास तभी आता है जब हमारे पास वो सोर्स ऑफ नॉलेज होगी, या फिर कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास ऑब्वियसली हमसे ज्यादा ज्ञान है. तो भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि कैसे आप अपने आपके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप हो, आपके अंदर विजडम डेवलप हो. तो पहला काम तो ये है. दूसरा काम ये है कि प्रभु जी ने बात की धर्म के बारे में. सो इट इज नॉट रिलेटेड टू सम रिलीजन. इट इज नॉट जस्ट रिलीजियसली ओरिएंटेड. हम जैसे अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, यहाँ पर वो चीज नहीं है. यहाँ पर भगवत गीता का मतलब ये है कि क्या सही है और क्या गलत है. इसका ये मतलब नहीं है कि आपको क्या पूजा पाठ करना है या कहाँ पर आरती करनी है, वो दूसरा मैटर है. लेकिन यहाँ पर चीज है कि आपको कैसे एक बेहतर इंसान बनाया जाए, जिसके अंदर की सर्विस एटीट्यूड हो, जिसके अंदर की फिलैंथ्रोपिकल एटीट्यूड हो, जिसके अंदर विजडम हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, सही और गलत की परख हो. तो यहाँ पर धर्म का मतलब ये है ताकि आप राइट कंडक्ट कर सकें, चीजों को सही तरीके से कर सकें. एंड ऑब्वियसली इट डज नॉट मीन दैट यू विल अबेंडन एवरीथिंग. इट मीन्स दैट वट एवर यू आर डूइंग, इट मस्ट बी डन with purity, with pure intention, with right frame of mind, with getting above the duality, and now the last thing which I think नीता मैम ने क्वेश्चन किया था कि डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि सभी धर्मों में कहीं ना कहीं चीजों को बताया जाता है, सभी धर्मों में सही चीजें बताई जाती हैं कि ये सही है और ये गलत है. भगवत गीता की अगर बात की जाए तो भगवत गीता में मोस्ट साइंटिफिकली उस चीज को बताया गया है कि अगर ये चीज है तो ये इस वजह से है. अगर हम क्रोध कर रहे हैं या अगर हमें लस्ट है तो उसका अगर हम रूट कॉज देखें, या अगर हम दुख में हैं या कोई भी चीज जो हमारे लाइफ में अनडिजायरेबल है, उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं कोई डिजायर है. हमने कुछ ना कुछ चाहा था, उसकी वजह से वो चीज हुई. और अगर हमें राइट सोर्स ऑफ नॉलेज मिलती है तो शायद हम वो डिजायर ही ना करें, शायद वो चीज हमें पसंद ही ना है, क्योंकि वंस वी गेट टू नो द ट्रू नेचर ऑफ दैट स्पेसिफिक डिजायर, फिर
की इच्छा ही खत्म हो जाती है, या फिर उसको अगर हम करेंगे भी तो फिर हम एक सर्विस एटीट्यूड के साथ करेंगे। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल द रिलीजियस बुक्स एंड भगवद गीता इज the pragmatic approach of Bhagavad Gita, the very scientific approach of Bhagavad Gita. And one more thing was there, एक शायद स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था इमोशन से रिलेटेड, तो इमोशंस भी कहीं ना कहीं मोड ऑफ इग्नोरेंस से जनरेट होता है। अगर हमें ये चीज पता है, क्योंकि हम किसी भी चीज से इमोशनली अटैच उसके पॉजिटिव साइड से होकर के होते हैं कि वहां से मुझे अच्छा लग रहा है, वो चीज मुझे अच्छी लग रही है, दैट्स व्हाई वी गेट इमोशनली कनेक्टेड। लेकिन अगर हम उसी चीज का होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखें तो कहीं ना कहीं हम इतने इमोशनल नहीं होंगे, या फिर अगर वो चीज वैसे नहीं जा रही है जैसे कि हमने सोचा था, अगर वो उस तरीके से कंक्लूड नहीं हो रही है, तो हम इतने ज्यादा इमोशनली अफेक्टेड नहीं होंगे, बिकॉज हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में काम नहीं कर रहे हैं, हम इग्नोरेंस के साथ नहीं जी रहे हैं, हमें उसकी रियलिटी पता है। तो भगवत गीता का सार अगर मैं बताऊं तो ये आपको इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ intellectual process, in terms of your knowledge, in terms of your wisdom, in terms of developing and inculcating service attitude within oneself, as well as making you karma conscious. Karma conscious does not mean that you are just looking at the result, but you are looking at the result for the betterment, not just for your own self, but the betterment of the whole mankind. यही चीज है जो इंसान को बाकी स्पीशीज से अलग बनाती है और बाकी इंसानों से अलग बनाती है। तो विद दीज एंड्स आई वेलकम उदिता मैम टू कंडक्ट द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू। धन्यवाद गरिमा। यहाँ एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन एक आया है, क्योंकि ये एड ऑन कोर्स से रिलेटेड है, तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। वैसे मैं चाहूंगी आप ही जवाब दें कि उनका कहना है कि जब कहा जाता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होना है अच्छा है, एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, then why are we following the principles and philosophy of different spiritual books? That is कि हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम ये कोर्स ही क्यों कर रहे हैं अगर सब कुछ डिस्टाइंड है या सब ठीक, ऐसा मुझे समझ आया। हरे कृष्णा। I hope I was audible. I am sorry. आप उमापति जी आपने प्रश्न सुना? हाँ सुनो। हाँ जी जी जी। तो आपका प्रश्न है कि भगवद गीता में या ऐसा कहा जाता है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो अच्छा ही हुआ, तो हम लोग फिर क्यों ये सब प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, क्यों ऐसा करना? जी। तो वैसे तो नितिन प्रभु इसको थोड़ा सा जैसे हिंट दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पे बताते हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है और हमें यहाँ पे संसार में भेजा है, एक चीज के साथ भेजा है, उसके वो है एक स्वतंत्र डिजायर, यानी कि हमारी फ्री विल, हमारी इच्छा है। इच्छा के कारण क्या है? इच्छा के कारण हम लोग जो है वो दुख पाते हैं या सुख पाते हैं, इस इच्छा के कारण पाते हैं। तो जो हो रहा है, इवन भगवान की तरफ से अगर भगवान की दृष्टि से देखें, भगवान बोलते हैं कि ना में कर्माणि लिप्यन्ति ना में कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई कर्म फल नहीं लगते, ठीक है, और ना ही मुझे कर्म फलों की स्पृहा है, ना ही मुझे उनकी इच्छा है। मैं भगवान कर्म फलों से मुक्त है, इसीलिए उनके लिए जो कुछ है अच्छा है। लेकिन ये अच्छा और बुरा हमारे लिए होता है, ठीक है ना। हम लोग इसको अच्छा और बुरा समझते हैं क्योंकि हम लोग बॉडीली कॉन्शियस है, हम लोग बॉडीली कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमारे पास फ्री विल है। फ्री विल कैसे? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई किसी व्यक्ति ने लाजपत नगर से कनॉट प्लेस जाना है, तो उसने एक ऑटो या कैब बुक किया, कैब बुक करके जाता है वो, और वो लाजपत नगर से कनॉट प्लेस तक जा रहे हैं। कनॉट प्लेस तक जाकर के उसने बोला कनॉट प्लेस आ गया, ड्राइवर ने कहा ओके कनॉट प्लेस आ गया, तो उसने कहा ठीक है आप उतर जाइए। उतर जाते हैं। उतरने के बाद ड्राइवर नॉक करता है, बोलता है आपका पे करो, रेंट पे करो। उसने बोला रेंट कैसे पे करूं? बोला गाड़ी आपकी चलाई है आपने, मैं किस बात का रेंट पे करूं? ठीक है। और इवन तो और वो बोलता है कि आप लेके भी मुझे आप ही आए हो, तो मैं किस बात का रेंट पे करूं? तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है जो पैसेंजर है वो बोलता है नहीं, सॉरी ड्राइवर बोलता है कि नहीं नहीं, लेके भी मैं आया हूँ, गाड़ी भी मेरी है, परंतु इसका डिजायर आपका है, आपने ये इच्छा किया है, इसीलिए इसका पे आपको करना होगा। उसी प्रकार से तो जो हमारे पास यही है, इसका ये इसके इसी उससे हम समझ सकते हैं कि हम लोग इच्छा करते हैं,
और इच्छा करने के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं। हाँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये उसके लिए कि भगवान सोचते हैं कि ठीक है, हम लोग हमारे जीवन में जो कुछ भी है, ठीक है, ऑफकोर्स अच्छे के लिए है। हमारे पास अगर हमें कुछ दुख आ रहे हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत सारे दुख हैं, तो हम शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं कि हमारे पुराने जन्म या पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध हैं हमें मिल रहे हैं, ठीक है, वो इस जन्म में हम उसको भोग रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है। और हम जो अब इस जन्म में कर रहे हैं, वो हमारा अगला जन्म निर्धारित कर रहा है, इसीलिए जो है वो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन हमारा जो वास्तविक जो है कि हमारे लिए जो अच्छा है, वो क्या है कि हम लोग अपना डिजायर ठीक कर लें। अगर हमारा डिजायर ठीक होगा, या हमारा हम जो हमारे जैसे हम बोल रहे हैं कि हम कर्म करने वाले हैं, हमारी जो इच्छा है, हम इच्छा को प्यूरिफाई कर लेंगे, तो फिर हम जो है इस द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे, अच्छे और बुरे के द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। फिर हमारे लिए होगा कि जहाँ जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो कुछ होगा वो भी अच्छा होगा, वो फिर हम उस द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। उससे पहले हम लोग जब तक बॉडली कॉन्शियस है तब तक ये मुक्त नहीं हो सकते। तब तक ऐसा रहेगा कि नहीं है, हमारे साथ पहले ही बुरा हुआ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारे साथ क्यों बुरा हो गया, ठीक है। जी बहुत धन्यवाद। अगर मैं इसको बहुत सरल भाषा में जो